Hello, 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 chat. We are live with pre-moves candidates day 6. It's only getting spicier every single day. Welcome Rakesh bhai, welcome DQ. क्या हालचाल कल के धमाकेदार दिन और ब्रॉडकास्ट के बाद क्या फीलिंग्स है आप लोगों की? हेलो चैट. Hello chat, hi. Hello. Namaste, Chad. What a game. What a round. Bhai, maza hi aa gaya kal. I think the best part was like Tiku bhai, Tanya, Samay, all on the panel who were working like super and Niri bhai also, of course. The 6 hour stream was rewarded when Abaso blundered in the last minute of the game. सही में man, सही में. I have to agree with that. I really wish Sahaj bhai was here so I could roast him, but we will get more opportunities, chat. We will really get many more opportunities because Abaso is yet to play 5 games against Indian players. DQ, did you watch the broadcast? क्या मस्त था ना, 6 बजे तक चला कल तो. Are, I watched till that first this one time pressure, like till 40-50 moves I watched, and after that I held my phone and I slept, you know. It's like it's playing in the background till I woke up, and then yeah, it ended after your broadcast ended. But man, what a crazy game that was, dude. Chat, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा कल का मैच? बहुत ही एपिक था एंड उसका हमने एक छोटा सा कंपाइलेशन आपके लिए तैयार किया है जो नीरी भाई हमारे लिए प्ले करेंगे. नीरी भाई, टेक ओवर. Let's go. It's a big day today. The players are well rested. Of course, knight f7. Double exclamation mark from the computer. And he's played the immediate knight c5 without taking on h2, which is an understandable decision. g4 on the board. Jan is relieved, I think, to have this endgame in the first place, and more motivated, I think, now to save the game. He comes back to e5, I guess. Called it, Judah. Objectively, at least, this might be a mistake. Queen takes b3, bishop b2, f6. The queen can drop back to c3, but that endgame, I cannot possibly see Vidit. Maybe he goes for that emotionally. Queen a4 on the board, and I think he's going to have to come to terms and pull out half a point out of this mess. Ooh. King. Apparently a mistake. Has played King king f5. Oof. Back to a draw. Wow, Sorry. and he gives a check. He doesn't find the draw. Oh, queen e5, and he's going to move the king with check and force the queen trade. Wow. Gukesh gets up. He knows it. Gets up with 1 minute and 30 seconds. And Abbasov just realizing the problem. You can see it on his face there. What a disaster for Abbasov. 5 seconds on the clock. Gotta make a move. 3 seconds, 2. Okay, and he's made it. He's taken on d3. He's losing. He's blundered. Oh my gosh. That's it. g3 and the game is over. He just forgot he's walking into a knight fork. It's unstoppable. Candidates. Wow. It just always brings out these unexpected moves, results. I must admit, I didn't see knight to f5. Well, it doesn't like her last move. The momentum was just slipping away from her. All 4 games have finished in a draw. हेलो चैट, वी आर बैक एंड ये छोटी सी वीडियो ब्रॉट टू यू बाय नीरी भाई, प्रोड्यूस्ड बाय चेसकॉम. क्या हाल चाल है चैट? एंड दिस इज गोइंग टू बी एपिक. द डे इज गेटिंग अमेजिंग मोर एंड मोर एवरी आवर. अभी गेम स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स फ्रॉम नाउ. चैट, आज कौन कौन जागने वाला है जल्दी से बताओ एज वी गो थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट डे एंड देन द पेयरिंग्स. नीरी भाई, जल्दी से रिजल्ट्स दिखा दो यार. कल क्या क्या हुआ दोनों सेक्शंस में? देखे कैसे हमारे इंडियन प्लेयर्स ने छा गए कल यार. लेट्स गो नीरी भाई. Bilkul, and while we get the results on the on our screen, Dev Saraf ji बोल रहे कि he was there with us throughout the stream last night. Atul Besra बोल रहे that watch the last 2 hours of the match after waking up. मतलब क्या ही बढ़िया शुरुआत हुई है उनके दिन की. और उदय बोल रहे compilation is heartbreak यार. Expected Prag and Vidit to win, and I also expected at least one of them to win. DQ, आपको क्या लगता है? Like, what happened? Did we miss a few points there? No, I totally agree with like Uday, dude. I am sad watching the compilation video now. See what see, I feel too bad for like Vidi and Prag a lot because Prag had like a beast preparation against Nepo. Like that was so crazy catching him off guard, and I think for the first time Nepo was like so down on time, and Prag is like, oh, I'm still at 150, 1 hour 50 minutes. 1 hour 46, and Nepo is like at 1 hour 50 minutes and all, like he was there. And Vidi, man, that's such a sad thing. Like
I mean, you can't really blame him, yeah, because broadcasters and I think someone was telling me Vishwanathan Anand sir could also not find the move King C2. Like he took like 20 minutes without like engine help. So you can't really blame them because they also have this time pressure with which they have to deal with. So, but Caruana there, that tricky defense, yeah, of finding that rook f8, queen a4, that entire variation of, rook f8, crazy, queen a7. That so hats off to him there. He's not easy to finish off. That's for sure. And Rakesh bhai, mera sawal ye hai ki, if you look at the women's section right now here, we had a draw of, Vaishali had a draw. That would be a very impressive result. And Humpy has still not been able to win her first game. So क्या लगता है वो कब मौका आएगा? Like, is she going to strike, or like, is it something that's not working out because she's on -1? I think yesterday, we were talking about वो must win wala zone. अभी ना धीरे धीरे with every round we are getting there. And like you said, I mean, if you have to win the tournament, आपको एक दो या मतलब ज्यादा ही गेम जीतने पड़ेंगे. आपको 4-5 गेम जीतने पड़ेंगे. So suddenly it's a great, I mean, today is a great day for Humpy ma'am to start winning. Yeah. And Niranjan bhai, can we have the standings of the women's section? Because तब हमें actually पता लगेगा कि कितनी लंबी छलांग लगानी है. Until then, तो हम बातें कर रहे हैं. Let's go, Niranjan bhai. Have the standings. And Tiku bhai, in a way, it was good that everybody drew. So even the like leader Tan couldn't go it won't further change ahead. much, yeah. Also, it's very impressive by Vaishali. She like managed to draw there. Like last time, I think I saw it. She was like in a worse position, and the pawns were just marching towards her king. Yeah, and I think the thing is same with Humpy and Anna Muzichuk. Both haven't been able to win. Very, very strong players, but at the bottom of the standings. Or Vaishali, हमारी India की hope, is a tied third position, which is 1 point behind the leader Tan Zhongyi. जो तो भाई जीत आगे ही चलते जा रही है. पहले राउंड से लीड में है Tan Zhongyi, and ये उसको पकड़ने के लिए टिकू भाई, Vaishali is like 1 point away. Humpy is 1.5 points away. So I think a series of our hat trick of wins is crucial at some point. And chat mein Harsh bhai is asking a very good question. Do you think by round 7, that is half the tournament, we will know who is on the way to challenge Ding? And I think Ding का अगर देखा जाए, same is the case for the women's section as well, right? So किस round तक होगा जब हमें भी एक नहीं एटलीस्ट पता होगा कि इन 2 या 3 में से ही कोई जीतने वाला है? Because I remember last time हम कैलकुलेट कर रहे थे कि it will be Caruana slash I think Nepo slash somebody else. So what is that round number, Rakesh bhai and DQ? DQ, I'll let you go first. Why? No, but I think it is not a round. I think it depends on the individual performance. Like if Nepo wins, like Nepo or Gukesh wins like 3 more games, I think then only we would know, like, okay. It all depends on like next 2 rounds, or like, if they win 2 games in a row, 3 games in a row, I think it would be like really difficult for other people to catch them. DQ. Whenever she goes first, though, she will never give a clear answer. And then फिर जब दूसरा बंदा बोलेगा, then she will say yes. नहीं, tell me. मैंने तो बोला ही था. I am an inexperienced person, okay? You guys are chess players. I'm a streamer, so I wouldn't know much. Don't be scared though. अरे ये लोग कैंडिडेट खेल रहे हैं. अगर वो मुझे blindfold rook queen down हरा सकते हैं ये लोग, तो भी हम लोग random predictions कर रहे हैं भाई. So it's all chill. You can defeat me blindfold rook down, so I shouldn't, right? But great question by Harsh in the chat, and just to let you know, guys, पिछले 6 candidate winners in the open section have all been leading at the halfway stage. So 7th round के end में ना एक rest day भी होता है, and mentally it's you, or like, I mean, everybody knows halfway stage is completed. So कुछ भी करके कोई भी player को, I think open में या women में, you have to get to like that stage where at least you are either in sole lead or in joint lead. So round 7, Harsh bhai, if you are looking for an answer. And I see Himadri in the chat also saying that really want a comeback from VD. I am absolutely agree with you there. And if we could have the men's standings or men's results first also on that note. Bhai, Tiku bhai, Queen E5 के बाद तो मुझे लगा ना VD जीतने वाला है. Queen G7
गया तभी तो मुझे लगा भाई अभी तो कुछ ही रह गया है. बट फाबी का वो ट्रिकी डिफेंस यार, मतलब so close, and I was like, मेरा ट्वीट ना रेडी था कि 2 losses in a row के बाद VD is our boy, like come on, पता है कि राकेश that's भाई, the way to make a comeback. But हल्के से रह गया यार टिकू भाई. ट्वीट ना दोनों स्केड्यूल कर दो भाई. स्केड्यूल पहले ही कर दो, जो गलत वाला होगा बाद में डिलीट कर देने का, कहना सॉरी मिस्टेक. क्योंकि ट्रेंडिंग तभी जाएगा भाई अगर स्ट्रीम पे हो गया, सुबह उठ के करोगे ट्वीट, इट्स टू लेट फॉर इट टू गो ट्रेंडिंग. Yes. And chat, we can see the result there. It's Prag against Nepo was a draw. Rakesh and DQ. That was, close to heart because start जब गेम हुई थी ना लग रहा था कि Prag is winning this. प्रेप में फंस चुका है नेपो, बट उन्होंने वो नाइट D7 मूव क्या निकाली यार, ओवर द बोर्ड बाय द वे, एंड ही फॉट लाइक अ वॉरियर यार. सो हैट्स ऑफ टू नेपो बाय द वे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो हुआ उस गेम का. Yes. I think that's what I started telling also, right? Ki, like when you saw Prag playing, that it was so inspiring. Like, okay, I was seeing broadcasts and I was watching like Levy's recaps also, and he said he prepared like 22 moves ahead. Like, he just he was in prep for like 23, 24 moves. That was like really impressive from Prag. Yeah, and I think the moment where he was sitting on the side and just chilling, and Nepo was deep in thought, that must give him confidence if the result didn't. But yes, imagine, matlab, Prag could have been half a point more at the end of the last. And main टिकू भाई का ना कल से चिल्ला के बोल रहे थे भाई, नेपो को हराओ तो ना लीडर आगे नहीं भागेगा, लीडर will be stopped. So which also helps Gukesh and VD. And the leader has kind of been at least थोड़ा ब्रेक नहीं लगाया, बट थोड़ा उन्होंने मतलब ना एक्सेलरेटर से पैर उठ चुका है फिलहाल के लिए, क्योंकि कल उनका एटलीस्ट ड्रॉ हुआ एंड गुकेश हैड चांस टू कैच अप. एंड जैसा हम पेयरिंग देखेंगे, गुकेश के लिए बहुत फेवरेबल पेयरिंग है आज चैट, एंड फिलहाल के लिए ही इज एट द टॉप ऑफ द टेबल, सो दैट इज गुड न्यूज. Prag in number 4 and VD भी थोड़ा तो rise करे rankings में, so he's also back. And answering chat's question कि does VD still have chances? Absolutely yes. I mean, Caruana से draw किया है in a winning position, he was almost there, so I won't say he has no chances there. 100%. I mean, you are alive in the tournament, and if you see the resourcefulness of Fabiano against VD was really good, and that is why only 3 people are unbeaten: Gukesh, VD, and Nepo. I mean, sorry, Gukesh, Nepo, and Fabi. Only 3 people are unbeaten. So that's actually it's very difficult to beat these guys. मतलब ऐसे और VD ने पूरी कोशिश करी. So let's keep supporting for him today. चैट मंदर भाई कह रहे हैं कि गरम गरम समोसे खा रहे हैं. चैट तुम्हें भी अगर गरम गरम समोसे चाहिए तो जल्दी से 30 के 300 लाइक कर दो, वरना किसी को समोसे नहीं मिलेंगे यार. मतलब अपना पेट भरो, अपने बगल वाले का पेट भरो, उसका नाम पढ़ो, उनका नाम है कौशल या क्या भी नाम है उनका, भाई पेट भरो, लाइक करो. लेट्स गेट टू 300 लाइक्स भाई जल्दी से. Yeah, and I think do you think like Nepo got like Jatka like because he was so close to losing yesterday? Like he was and I don't think so. He will still push for win, like no matter. थोड़ा बहुत तो लगा होगा यार, थोड़ा बहुत तो लगा होगा राकेश भाई, नहीं हल्का सा लगा. नहीं, इनफैक्ट वो सोचेगा भाई ये तो मेरा ही टूर्नामेंट है, मैं इतनी गंदी पोजीशन से भी मैं बिना हारे आगे गया हूँ. So that gives you confidence for sure. Samay in COB, but not the last one. Not the last favorite child. ये क्या था भाई? It is like that, right? Like hopefully we can say that for Nepo also, yeah. It's like the candidates, but not the last one. This should be the last one, yeah. Chat, by the way, we have the pairings for the women's section. आज का round बहुत important. First we have Vaishali against Lagno. Rakesh bhai, Vaishali has kind of risen up. Do you think she has it within herself to win this game? Yes, I think she'll be very confident after वो पिछले राउंड का उसका resourcefulness था against Muzichuk. और chat आपको तो पता ही है, if Vaishali wins, Prag will also win and vice versa. So I hope if she wins, Prag continues that and दोनों ही जीते और इंडिया को बहुत सारे खुशियों के मोमेंट्स दे आज रात को. We should match the moment जहाँ पे Prag की position win से equal हुई और जहाँ पे वैशाली drew. And see if there is some link की मतलब भगवान देख रहा है ऊपर से कि दोनों का result एक ही होना है. That could be a coincidence, chat. Maybe somebody can check the timestamps and see if that's true. But anyways, yeah, I do think she can win this game. I think Lagno. I don't think Lagno is in the top half. Is she? I'm not exactly sure. I'll verify this. But I do feel that she has great chances.
And Humpy against Tanmay in chat is also saying Vaishali is going to win today. So plenty of support in chat also for Vaishali. And yes, DQ. अरे टिको में आप DQ का पूछना भूल गए DQ. अरे यार मैं एक्स्ट्रा पूछता हूँ तो हमें थोड़ा डिफेंसिव खेलो स्टार्टिंग से भाई. अगर मुझे डाउट है तो मैं दोबारा नहीं पूछता. No, I will go with Tanmay ji. Definitely, I will also want Vaishali to win. I'm gonna go with that. Yeah. Harsh is asking, I have a question for you. ये games देखते time लगता है I have improved. सही moves मिलते हैं and all. खेलते टाइम ब्लंडर फेस्ट क्यों होता है फिर? खेलते टाइम ब्लंडर फेस्ट क्यों होता है? आई थिंक वो ना सिर्फ आपको लगता है आपने सही मूव खेला है, बट कई बारी ना मे बी दैट्स अ मूव विच वी आर डिस्कसिंग. सो अगर आप म्यूट पे देख रहे हैं तो अलग बात है, बट जस्ट ट्राई टू एम फॉर स्मॉलर इम्प्रूवमेंट्स. मतलब 1000 से 1200, सीधे 1000 से 2000 might look difficult. So just and studying chess is really helps, like not just watching live streams, but if you study the puzzles and all. And DQ, what do you do for studying chess actually? I'm very curious. Let's just not talk about it. I was going to say it's very easy to watch a game than play a game, okay? So he said like when he's watching, he can get all the moves because it's not your game. When you're in it, when it's your game, it's really difficult to get that, you know. You think for everything, you overthink twice or thrice, and you end up doing the bad move than the better move. You already found it. But yeah. अरे मतलब it's like अगर तुम दूसरे गेम देख रहे हो, कोई पीस सैक हो रहा है, अरे भाई करते हैं ना, देखते हैं भाई क्या होगा, नाइट G5 नाइट F7 देखते हैं भाई, क्या पता कुछ हो जाए. अपने में क्या यार, ये प्यादा आधा कदम चल सकता हूँ क्या मैं, ज्यादा घर से बाहर ना निकले. Why? Like it's not your game, so that you will take the risk. But if it's your game, you will think, oh, this is there, and I can't do it. So yeah, like they say. Yeah. Go ahead. No, someone is saying that she doesn't study chess, so I totally agree. Yeah, and to complete Tiku's point, not your game, not your pieces, chat. That is why it feels easier. So let's check out Humpy versus Li Tinchi. 3-0 की lead भाई. Chat, क्या लगता है ये आज 4-0 की lead होगी Humpy मैम के लिए? Let us know in the comments. And over to DQ first. Your thoughts on this match? And I think you already the head-to-head, like, you know, it's showing, right? I totally go with that statistics. Humpy ma'am with a win. Finally, I think she will start today. Already, it's also like, you know, mentally she's prepared for it. I guess. She has to. I mean, she's technically the top seed, right? If I'm not mistaken. No, she isn't. Second seed, maybe. But technically, yeah. Yeah, so I think अब तो आना ही है. I think she's had enough games to, you know, settle down. थोड़ा Toronto का temperature, time zone, everything, and now she will play her normal chess. And normal chess में तो फिर यार she's the best, so she will crush everyone now, one by one. अब देखते जाओ, आज तो पक्का win है भाई. This will be my prediction. This is the shortest game. आज हाँ Humpy wins. Wow. 100%. Let's go. That's a big one actually. That's a big one to claim that. Yeah. Shortest game against Sahil with bold predictions. No, for sure, because I think that too. Yeah. I think it's pretty obvious now by now. Like, oh, it's pending, yaar. It's like, मतलब, you know, pending ही है. ये बहुत time से चल रहा है, and I think she will win today, 100%. There's no doubt. Yeah. Abhi chat, we just told, right? Your game, it's not your game, so you can give opinions. It's like that. But yeah, what are you saying, Rakesh? Right? Yeah, I was going to ask chat also, and even DQ, maybe even Sahil bhai. Like, do you know who is Li Tinchi, like Humpy ma'am's opponent? Like, what is her most famous achievement? I think she is a Chinese player who won that event. No, I think कोई बहुत event she won. World Cup था कि? हाँ, वही वाला ना, वो बचपन में 15 साल पहले वो. Could be youngest something. No. I mean, related to the women's candidates. How did she qualify to the women's candidates? Chat ये बता दो भाई. Diamond membership सीधे सबसे पहले बंदे को. DQ अगर आप बोलोगे तो आपका भी 1 month से extend कर देंगे. नहीं, मुझे नहीं पता है. Guys, you get it. Yeah. DQ भाई आप बोलो. Any luck? मेरा अगर नहीं बताऊंगा तो subtract तो नहीं कर दोगे ना? There you have it.
There you have it. Kragan in the chat. World Championship challenger hai guys. So 2023 World Championship match she played with Wenjun Ju. And Li Tinji lost in the 12th game. Matlab, socho, I think score was 5.5, 5.5, neck and neck till 11 rounds, and she lost in the last game, sadly. So Humpy ji is playing a very, very strong player, but in this tournament, Lee is like at the bottom of the standings, hasn't won a game. So as Tikku bhai asked us, when will Humpy man start winning? I think all three of us and in chat unanimously are saying yes, and I see a resounding 79% that says that agrees Humpy man will win. बढ़िया एंड आई थिंक आज वुमेन सेक्शन का चंगा दिख रहा है सब सो इसी के साथ चलते हैं भाई ओपन सेक्शन में निरंजन भाई एंड लेट्स हैव अ लुक एट द पेयरिंग्स बिकॉज आज ना मतलब कुछ पेयरिंग्स कुछ ऐसी खतरनाक है कि देख के ही फील आ रही है यार बिकॉज टुडे वी माइट हैव अ ग्रेट डे Rakesh and DQ I mean just look at the pairings look at the name of the left and the right and ये lineups ना मतलब usually ना हमें एक साल वेट करना पड़ता था कभी स्पीड चेस चैंपियनशिप में इनका मैच होगा एक बुलेट मैच होगा वो या ब्लिट्स मैच होगा वो देखने को मिलेगा आपस में फिर उसके लिए हम हाइप बनाते थे कि भाई इतने टाइम बाद एक मैच आना है आजकल तो ये हर दिन हो रहे हैं यार इस टूर्नामेंट में हर दिन एंड आई मीन जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम गेम देयर नेपो अगेंस्ट कारुआना what are your feelings about that game looking at ki wo number 2 or number 3 ka match hai well draws also like see their head to head I think they played the most in all the people I think it could be from candidates itself I guess right like previous candidates so candidates only like 4 of those games are from the last 2 candidates itself and they both play at the highest level Abaso like as you know hasn't really like played at the top level and the three other Indians are just making the comeback I think we have our guest here in on the call so welcome firstly welcome Mrinal bhai and chat agar aap pooch rahe ki Mrinal bhai yahan tak kaise pahunche so he won our giveaway contest on social media jahan pe unhone describe kiya why he's rooting for one of the Indian players and who is your favorite Indian player Mrinal bhai tell us you know there's no doubt that Vidit is my favorite player I think everyone knows it and Rakesh bhai you already know my Chesscom username so it goes without saying that Vidit I've been following him since the last 8 years from 2015-16 onwards so like I have seen him VD 1.0 and now I am seeing VD 2.0. So like since I followed him for so many years and of course another reason is that he is our age group unlike the youngsters. So the one candidate whom I am following is Vidit irrespective whether he wins or not. Of course I want an Indian to win and if Vidit wins it's better but I am a huge Vidit fan and I will root for Vidit irrespective of the results of these candidates. Let's go. Now, for chat who don't know the context, his chess.com ID is very creative. Yeah, I've seen it and I've laughed about it a lot. What's the ID? What's the ID, Vinay? What's the ID? It's Vidit Gujrathi. It cracks me up. I don't know why. Like he just exchanged few letters and yeah. That's a really cool one. Yeah. But so Mrinal bhai, I have a question for you. How happy or sad are you looking at VD's performance so far? So, okay, like after the second game when he beat Hikaru with his crazy opening preparation, I was literally on top of the moon. Now, the next 2 games, they were bad. We see the moon behind you. We can see that, yeah. Piche dikh raha hai bhai aapke. And the next 2 games, it was disappointing to see him lose because in both the games, it was actually opening preparation that got the better of him. And the last game against Fabi, okay, that Queen E5, we were all following the live stream yesterday with Sahil and Sahaj and Tanya. And it was actually very disappointing that he was so close to winning yesterday. And, chess is a very cruel game. One move and the eval dropped from +3 to 0. Okay, like I am not that strong player, technically sound. So do not ask me why the eval fell down. But like the chat generally sees the bar.
And when we saw the bar coming down from 3-0, I think that was heartbreaking. And when Fabi found that Queen A4, I think everybody knew that this game where it's heading to. So yeah, chess can be cruel. And yesterday we saw a live example. Prag was completely winning, Vidit was completely better, and they both could not convert. So it was a kind of a sad day for Indians, but the icing on the cake was Gukesh. He's still there in the race to become the candidate. He's the joint leader. Meenal, Abhi Gukesh is the leader, but if we quickly switch to the Vidit pairing, he's playing Firuzja today, and Firuzja bilkul bottom of the table pe hai abhi, along with Nijat. So how where do you place Vidit's chances today? Because aaj bahut important game hai. Yeah, this is the game where I think Vidit will come back, because Firuzja is one opponent where Vidit has had a very good record. Now, you see, this promises to be a thrilling game for me, because this is actually a game of experience versus youth. Like we know, Firuzja is full of he plays crazy stuff. He's full of attacking chess. He's a very dynamic player. But when I say Vidit is experienced, he may not have that experience as in playing a lot of top level close tournaments. But age-wise, he is experienced. And Vidit has never lost to Firuzja. I think he has in his recent last in Tata Steel Chess. In Vaikanzi, we saw Vidit defeating Firuzja with the white pieces, and today again he's playing with the white pieces. So as a Vidit fan, given that he's had 2 losses, I think this is the game which Vidit would be seeing as the comeback, the start of his comeback journey. Because in the last time when Vidit faced Firuzja with the white pieces, he actually crushed him. So I'm hoping for a similar result. And what about you guys? Yeah, that makes a lot of sense. I would say कि it's for me, it's not even कि होगा कि नहीं होगा, होना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन ही नहीं है. It's like मतलब अगर मुझे नींद से उठना है, सुबह कॉफी तो पीनी है भाई, मुझे नहाना है, मुझे पानी पीना है, खाना खाना है, मतलब होना ही है. मतलब एक दिन के लिए थोड़ा रोक लूंगा, नहीं खाना खाऊंगा, बट होना ही है. सो आज विदित को स्ट्राइक करना ही पड़ेगा. कल फिर से ब्लैक आएंगे, फिर से मुश्किल हो जाएगा. आज व्हाइट है, बॉटम ऑफ द टेबल वाले बंदे के साथ है. सो करते हैं ना भाई, खत्म करते हैं ना आज प्लस 0 पे आते हैं बराबर, एंड देन लेट्स गो थ्रू. सो आई एम प्रेडिक्टिंग अ विन हियर. व्हाट अबाउट राकेश एंड डीक्यू? I will let DQ go first. Yeah, I think also Firuzja would lose hope. I think, as you said, it's really difficult for him to, and he might be playing just also with black. So there is a lot of chance that he might be already he lost hope in winning. So I think it would be a win for Vidit. I'm predicting it. Rakesh bhai. I am also predicting a win for VD. क्योंकि apart from all the good research and points मृणाल ने जो बोला, उसको छोड़ के भाई कल आपने देखा चैट, मतलब फिरूजा कैसे हालत में हारा. सेम एज अब्बासो, मतलब वो खेल रहा था नाकामुरा के साथ, पोजीशन बहुत इक्वल थी और लास्ट मिनट में ब्लंडर किया एंड फिरूजा हार गया. सो इट्स आल्सो काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग फॉर फिरूजा, एंड उसकी सिचुएशन भी इतनी खास नहीं है टूर्नामेंट में. एंड ऑफ कोर्स वीडी के पास व्हाइट पीसेस है, एंड लाइक साहिल सेड, भाई कभी ना कभी तो जीतना चालू करना ही पड़ेगा वीडी को. एंड उससे मृणाल के लिए एक सवाल है कि क्या आपको लगता है वीडी का अभी वो ये जोन आ गया, डू और डाई सिचुएशन टाइप? Yeah, I'm very hopeful of a VD comeback. If you look at the way he qualified for this candidates, first round of the FIDE Grand Swiss, he lost to Erwin Lamy. And from there, nobody gave him a chance that he will actually win the Grand Swiss and he will make it till this far. Nobody expected this. So again, we are in a similar situation where, if you have to put your money on someone to win candidates among the Indians or anybody, Vidit and Firuzja are probably the last 2 people you would put your money on. And this is where, I feel that from this game onwards, this is where Vidit has to start striking, and he has nothing to lose. Already he's not in a very good position. So he can actually go and play very freely. And I think that is the time when you actually start getting results. When you know there's nothing to lose, when the stakes are very high, of course, the odds here are very low. So I think there's nothing for Vidit to lose here. So I'm hopeful that he will go all out. And I'm expecting some crazy fireworks. I can guarantee you he's thinking there's a lot to lose भाई आज के दिन में. हाँ भाई उसकी तो अभी जो स्ट्रेस होगा ना उसको, मतलब उसको अगर हम मेजर करें, मतलब बोलते हैं ना, तो वो हमें बहुत बीमार कर सकता है. इतना स्ट्रेस भाई, इतना स्ट्रेस होगा वीडी को.
But yeah, I kind of agree कि मतलब he is not the favorite right now in the standings, so it will be like he will think कि okay ठीक है, मतलब it's not going so well already. But I think because he drew yesterday, उसको फिर से उम्मीद मिली होगी कि okay, now I can win this. Maybe I can have a comeback journey similar to my candidate's path. So it is possible. But you know, कहीं ना कहीं पे वो प्रेशर हटा के उसको निकालो दिमाग से, साइड में रखो, वो कैपेसिटी वीडी में होगी तो आज आई थिंक वी माइट टेक दिस होम. एंड या दिस विल बी अमेजिंग टू वॉच, राकेश भाई. Yeah. Bilkul. And chat, if you are asking us how in the world did Mrinal get here, that is how, because he won our social media giveaway, where you have to tell us कि भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और क्यों है. चैट, तो आप भी, हम चाहते हैं कि हमारे प्री शो ऐसे ये वाले शो में और लोग जुड़े, अपने मेन प्लेयर को आप चीयर करें बहुत अच्छी तरह से. तो मृणाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड जाने के पहले क्या आप एक मैसेज वीडी को और वीडी के फैंस को देना चाहेंगे आज? Yeah, guys, don't lose hope. Vidit is still very much in the race, and let's all cheer for him, and let's hope that he makes a crazy comeback, you know, a comeback like never before, and let's hope that that just how he made it to the candidates, he makes it to the World Championship match against Ding, and from there on he becomes the next world champion. क्या बात है. Let's go. VDOP हो जाए चैट, VDOP. Yes. Thank you Mrinal bhai for joining. Thank you so much for having me, guys. Thank you. Thanks Mrinal भाई. एक एसके भाई चैट में लिख रहे हैं थोड़ा गीत नाच मचा लो. भाई यार एक गलत जगह स्ट्रीम कर लिया क्या राकेश भाई? हम डांस कॉम में थे क्या? अरे यार एक गलत जगह स्ट्रीम. भाई व्हाट आर यू डूइंग भाई? नाच गाना गलत जगह स्ट्रीम कर रहे हैं. एनीवेज ठीक है. So I think Vidit का गेम हमने देख लिया. We all picked a win there. So going back to the game of Nepo against Caruana, Rakesh bhai, what's your prediction? Number 2, number 3, दोनों player are gearing up towards getting to the lead. So कौन वहां पे strike करेगा? I think I want this game to end in a draw, and I feel this game will be a draw. Fighting draw होगा. Nepo will come all guns blazing, and Fabi ना कल के जैसे एकदम resourceful defense लगाएगा और एंड में गेम ड्रॉ होगा. DQ, आपको क्या लगता है? Yes, I think the same too. Like I think it would be a draw. Both won't take risk. Like I mean, I feel that they both are safe at the top of the table, right? So no, I think Fabi is half point behind. No, Gukesh and Nepo are late. हाँ, but मेरा प्रेडिक्शन कुछ डिफरेंट है, पता है? मुझे लग रहा है ना फैबी के अंदर वो पिछले कैंडिडेट्स का रेजिडुअल एंगर बचा हुआ थोड़ा सा, कि भाई पिछली बार ये बंदा इतना आगे निकल गया, मैं हारता रहा, ये जीतता रहा, मैं हारता रहा. इंसर्ट शाहरुख खान सॉन्ग देयर. बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज वो रेजिडुअल एंगर के साथ आएंगे, कहेंगे भाई जीतना है. नेपो फिर से भाई गेम जीत जाएगा. मुझे लग रहा है टुडे नेपो विंस. दैट्स माय प्रेडिक्शन. चैट, व्हाट डू यू थिंक? चैट, मैं पोल लगा रहा हूं, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये ड्रॉ होती है एंड गुकेश विंस, गुकेश गेट्स द सोल लीड. लेट्स गो चैट. भाई ये अगर हो गया तो फिर ना मतलब इट्स जस्ट मोर प्रेशर ऑन द अदर प्लेयर्स आल्सो. आप सोचो मतलब गुकेश वगैरह जाने दो, बट पीछे से सडनली वीडी नीड्स 4 विंस इंस्टेड ऑफ मे बी 3 विंस. तो ना वो बहुत कुछ दुख का ही खत्म नहीं होता है भाई. वीडी और चल रहा है भाई. But yeah, chat, you're saying that we are not reading chat. What is this? Write some good things. Now we will read. If you're like talking negatively, why would we read it out loud, right? So मैंने ड्रॉ हटाई दी ऑप्शन से भाई. ड्रॉ नहीं होने वाला भाई. लेट्स सी चैट के साथ सपोर्ट. अरे यार हद है. अरे तेरा सिंह कह रहा है कि इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर इंडियन सारे गेम जीत गए, तीनों के तीनों. ओह, ये हम कल भी सोचे थे यार. स्ट्रीम के बीच में जब मैंने कैमरा ऑफ किया था, इसलिए कहता रो रहा था पीछे बैठ के. यार नहीं भाई, आई एम नॉट गोइंग टू इमेजिन दैट. कल मैंने यही इमेजिन किया था, फिर रोने की नौबत आ गई थी. लेट्स वेट एंड सी क्या होता है. या आल्सो राकेश, आप कुछ बताने वाले थे कल का बेस्ट थिंग. कल का बेस्ट थिंग क्या था? कल गेम्स का राउंड 5 का. Oh yeah, that was I think when after 6 hours of the stream, मतलब जब ही Nijat Abbaso extended his hand to resign, and Gukesh won a fine game. I mean that was like, and जबकि मेरे को तो लगा ना एक पॉइंट में वो गेम तो ड्रॉ होने ही वाला है. And imagine Gukesh का, like if he wants to win the tournament, you have to score big against the lower rated guys like Abbaso. And वो टाइम पे अगर गुकेश was मतलब इंजन का टिको पे आप आई थिंक कमेंट्री देख रहा था मैं, उसमें लिखा था 0.00, like that was the eval bar.
जब भी क्वीन F1 चेक दिया उसने लास्ट में क्वीन F, तो क्वीन G2 वाज द मूव चैट. बहुत मुश्किल था, बट भाई जो खुशी हुई ना तभी की, मतलब 12 से 6 पूरी नींद और सब कुछ बर्बाद करके अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो दैट वाज द फ्रूट. आई थिंक बहुत सही लगा. ठीक है, आप तो लाइव थे, आपका कैसा फीलिंग है? मैं तो टेबल बेस खोल के बैठा था बगल में. मुझे बता रहा है भाई कि मतलब ये हो गया ड्रॉ भाई. अब उसके पास 2 तरीके हैं ड्रॉ करने के, अब 3 तरीके हैं ड्रॉ करने के, अब 5 तरीके हैं ड्रॉ करने के. मैंने कहा बंद करो यार, टेबल रोना आ रहा है मुझे. तो इसलिए फिर वही हो गया. और तान्या ने आपको कैजुअली रोस्ट भी किया. भाई आज से टेबल बेस में कभी नहीं खोलूंगा भाई. साइड ब्लॉक कर दिया मैंने. राकेश भाई का सपना भी पूरा हुआ ना. He wanted like Sahil to do a 6-hour stream. Yes, finally exactly. Finally. And that's a great question. Like that's a great segue actually, DQ. Ki in the first few rounds, na first 4 rounds, we didn't see any game go that far. मतलब साहिल भाई तो 3:30-4 बजे ही सो रहे थे जल्दी. मतलब पूरा पेमेंट जो हुआ है उसका वसूली भी नहीं हो रहा था. But do you think after yesterday's game, we'll start to see ki games longer, because even players are getting used to the new time control of not getting increments. But also it would be very tough for them also, right? Like they have to play every day 6-hour games and go back, prepare and play it next day. So I think it won't be there every day, but some days it like yesterday. एक गेम तो चलेगी. I think now that they're getting used to it and stakes are rising, तो कहीं ना कहीं पे they will adapt to the time control and it will go longer. And we might have a day chat. मैंने पिछले कैंडिडेट्स का ये स्टार्ट होने से पहले चेक किया था कितनी लंबी स्ट्रीम चली थी. एक स्ट्रीम चली थी चेसकॉम इंडिया की 8 घंटे. So 8 घंटे स्ट्रीम चली थी. So if we follow that pattern, तो सुबह 8 बजे तो स्ट्रीम खत्म होगी भाई. तो उस दिन मैं कब सोऊंगा, फिर सोना ही नहीं है, फिर अगली स्ट्रीम तभी कर लेते हैं. राकेश भाई क्या बोलते हो? नहीं बिल्कुल. एंड आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने बोला टिक्को भाई, वो है स्टेक्स. स्टेक्स तो भाई हर गेम के साथ बढ़ने वाला है. और जो हमने देखा कि कल भी नाकामुरा जीतने के पहले ना, जब भी उसने पॉन पुश किया, उसका हैंड भी शिवर हो रहा है. मतलब जस्ट इमेजिन द प्रेशर, द नर्व्स एट दिस स्टेज. एंड टिको भाई जितने मेरे को भी लगता है जितने ज्यादा आप जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर, मे बी नॉट 14th राउंड, बट दिस पीरियड टिल द 12th राउंड, मेरे को तो लगता है कि भाई टिको भाई रोज 6 बजे के बाद ही सोने वाले. मुझे अब एक ईमेल आया है, यू आर गिफ्टेड अ चैनल मेंबरशिप टू अनीश नायक्स यूट्यूब चैनल. अरे भाई वहां में मैं 10 साल से खोला ही नहीं है भाई, गिफ्ट किसने कर दिया? एनीवे सॉरी शायद अनीश गिरी का देना है तो वर्थ इट है ना. Just kidding, I love you, Anish bhai. Also, but yesterday's Gukesh's game was such a topsy-turvy game, yeah. Like till 40th move, I think I was watching the other broadcast also. Judith ma'am was saying like after 40th move, it's again a new game for Gukesh. Like he has to try and get the advantage back again in order to have any chances. But like kudos to him, and after that also he found like the one move, and at one point they were just playing on increments, I believe. Like they were just... But there's one element there, because Abasov is the lowest seed. He made that mistake at the end. I don't think Caruana Hikaru will make that mistake. So if we come to today's pairing, that is Gukesh against Hikaru, Rakesh bhai and DQ, I somehow feel that even Gukesh has struggled with the clock a little bit. Yeah, matlab, even though his results have not shown that yet, you've seen him have less time against Prague, less time against Wo, fallen to prep of couple of opponents. So do you think he's set up for Hikaru, who has just won with the black pieces yesterday against Firouzja? So what are your predictions for that round? Chat, I'm setting up the poll. Let's go. Yeah, just before we wrap that, 50% of the chat thinks कि भाई लंबे गेम चलेंगे. And yes, DQ, आप बोल रहे थे. Yeah. I think yesterday Hikaru was also in the time pressure. Like he made the last move with 30 seconds on only, like at the 40th move in. So it would be really fun to see, but Gukesh with white pieces. So I think I would like Gukesh winning. I would also love to see a Gukesh win, but I think ये game draw में end होगा. Two players, have like coming back from a win, coming into this round with a win, और मतलब दोनों ही चाहेंगे जीतना, but Hikaru ना बहुत smart है, उसको पता है कि मैं एक game draw कर लेता हूँ. Then again he can maybe push with the white pieces. Yesterday he was black against Firouzja. So after 2 black games, he'll be getting some more white games. So I think नाका सोचेगा कि भाई थोड़ा chill कर लेता है, and उसका
ये देखा कि नहीं टिको भाई आपने हिकारू का यूट्यूब चैनल यूट्यूब हाँ वाला नहीं थंबनेल देखा मैंने, I थंबनेल did, देखा I था, मैंने did. थंबनेल देखा था। Yeah, हाँ yeah, yeah. नहीं वो In बहुत सही space था or बहुत सही something. हाँ हाँ हाँ. हाँ हाँ हाँ। सो या आई थिंक आई एम प्रेडिक्टिंग अ ड्रॉ इन दिस वन टिकू भाई आपको क्या लगता है यार this one is difficult to predict. I agree with you. I think Hikaru will be very happy with the draw here. ऐसा मुझे लग रहा है. But गुकेश का मुझे पता नहीं. गुकेश का I'm not so sure because as we clearly know, वो हमेशा most ambitious choice ही choose करते हैं. I mean, if he has to attack on the king side, he will go for that. Pass pawn create करना है, he will go for that. उसको Mount Everest climb करना है, he will go for that. He will not shy away. So I do think he कहीं ना कहीं पे Hikaru will not get what he wants and we will have a result. I am not sure कि वो result क्या होगा, लेकिन that is the question. I mean, we will anyways have a result, win, No, draw, I mean, loss. like- It would be a Exactly. result. I mean, मतलब- win or Sahil, loss. wow, No nice draws. answer, chat. when you Nice want to answer. avoid the question He just said like a whole paragraph and then like, oh, there will be a result. As if we did not know that. No draws here, I But think. yeah. No draws. No draws. draw. No Okay. draws. It would be decisive, you think? Okay. Chat कह रही है 55% गुकेश win, 18% Hikaru. भाई अच्छा Hikaru stream ही देखता है हमारी, और 26% draw. Wow. So full support Wow. for Gukesh in the chat as well, and I think पहली win होगी उनकी क्लासिकल में. That will be good. एक 1-1 हो जाएगा वहां पे, मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ क्रूशियल गेम फॉर गुकेश क्योंकि ना सडनली नाउ ही इज इन द लीड लाइक ही इज वन ऑफ द लीडर्स तो उसके ऊपर ना और ज्यादा निगाहें और नजरें होंगी लोगों की एंड इफ ही विंस टुडे एंड नेपो का ड्रॉ हो जाता भाई सोल लीड अ 17-year-old 17 साल का लौंडा जो अपकमिंग इलेक्शंस में वोट भी नहीं कर सकता ही माइट बिकम द कैंडिडेट चैंपियन टिकू भाई मतलब क्या ही चल रहा है So he might vote for the first time as a world champion, भाई. That is possible. क्या बात Or है at least a, क्या at least a बात world championship challenger, yeah. At least a world Yeah. championship challenger. Yeah. No, Correct, also it's correct. like, but also I wouldn't want him to like, it's a risk-free, round for him. I don't want him to like, over push and it will affect him on the further rounds, right? Like if anything happens today. So that's the one thing, we all should also keep in mind. They can't push every game for a win and some might, it just True. destroys his flow. That's what I would like to say. Like one loss and it'll be like, Yeah. unnecessary. True. Very true. And I But think there's only one game remaining, and that is Pragg against Abasov. So, Abasov coming off the loss yesterday, लगता है क्या कि मतलब कल सोचेगा यार कल भी हार गया यार, मतलब अब क्या मतलब खेलने का यार, ब्लैक से 2 गेम खेली है, दोनों हारा हूं, 100% लूज रिकॉर्ड है, आज तीसरा गेम आ गया वो भी प्रग के वापस साथ, ब्लैक वापस ब्लैक. तो black. डू यू थिंक ही इज ऑलरेडी लॉस्ट होप एंड साहस भाई को रोस्ट करने को बहुत मिलेगा आज? डू यू थिंक सो? यस आई थिंक सो आज तो I मतलब yes बोल दिया भाई. No, matlab, Pragg is also showing like the incredible preparation, right? So I think he will catch Abasov in the prep only. Like Pragg would get I mean he even caught Nepo off guard, so I did think like it would be a bit easy only. True, Yeah, very So very good point. his And team might be preparing good lines against, right? Like Abasov. So yeah. मुझे भी I लगता है आई think- I थिंक think- बहुत ही आई थिंक सारा गुस्सा जो है प्रग के अंदर कल का वो सब बेचारे अब्बासों पे निकलने वाला ही इज गोइंग टू जस्ट लाइक थ्रो द किचन से पूरा ऑल आउट जाके आज हराने वाला है वो अब्बासों को एंड तन्मय इन द चैट इज आल्सो सेइंग दैट माय 2 cents प्रग विल बीट अब्बासो इन अंडर 30 मूव्स और चैट मुझे लगता है आई कंप्लीटली एग्री विद तन्मय वी माइट सी सम क्रेजी सैक्रिफाइस ओपनिंग प्रेप आइडिया लाइक डीक्यू सिंह और भाई मतलब मेरे को तो लग रहा है प्रग इज विनिंग दिस वन बाकी गेम्स का पता नहीं बट दैट ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन टिकू भाई व्हाई इज अनीश गिरी प्रेडिक्टिंग 4 ड्रॉज मतलब क्या घुस गया उसमें आज भाई अनीश ना डर गया है, उनकी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं बैठ रही है, तो ही इज लाइक आई विल गो फॉर ऑल ड्रॉज, तो 2-3 तो बैठेंगे ही बैठेंगे पक्का. अनीश भाई डरो Why मत भाई, ना? डरो मत भाई प्लीज. No, could Go for be jinx for Vidit. No, he said Vidit wins and Vidit lost, and he said opponent wins and Vidit drew. So maybe this is the way Vidit wins. So he might be doing that. He is trying all of them.
But I think Yeah, this is the first time he's predicting all draws, no? He did not do it. हाँ, true. But I think अनीश का ये है ना कि मतलब he's just promoting his course at the end कि भाई कोर्स प्रमोट हो जाए भाई, लास्ट में एक बंदे को ग्रंटफील्ड कोर्स देंगे वो. मेरा मन तो करा था उनको रिप्लाई करो, मैंने कहा छोड़ो यार, ग्रंटफील्ड वैसे भी नहीं खेलना मैंने. Yeah. And yeah, overwhelming lead, I think 88% for versus 3% for Abbas. So Prag is completely साज winning भाई that. So चैट में let's. मतलब साज भाई चैट में. हेलो साज भाई, क्या हालचाल? तो ये कैसे हो भाई? पता नहीं था कि आप प्री शो भी देखते हो यार, आ ही जाते फिर कोई स्ट्रीम पे. एनीवेज, सॉरी, कंटिन्यू राकेश भाई. But on a serious note, भाई ये such क्या हुआ? details. Kudos भाई to Sahil bhai. Yes. क्या हो गया? शौक लगा क्या आपको? कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, भाई नहीं भाई, आप अटक गए थे भाई. भाई अच्छा. आप एक सेकंड ऐसे अटक गए थे भाई. नहीं, साहिल को मैंने कहा भाई ये क्या हो गया राकेश भाई को भाई. नहीं, I think साहिल को मेरा कॉम्प्लीमेंट्स इंटरनेट मिल रहा है ना. Yeah, नेट को भी सही नहीं लगा वो. तो करेक्ट. रोस्ट करने का कैजुअल, रोस्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बट Terat Singh is saying hats off to you guys for covering the candidates in such details. Kudos to Sahil bhai. भाई साहिल भाई, चैट और जनता को मजा आ रहा है ये प्री शो में या ओवरऑल स्ट्रीम में. आपको कैसा लग रहा है 5 राउंड के बाद, लुकिंग एट द इंडियन परफॉर्मेंस एंड इवन पर्सनली, आर यू एंजॉयिंग दिस एज अ चेस फैन? भाई चैट में जो एक बंदा घूम रहा है उसको आपने पूरा लाइसेंस दे दिया हमारे मजे लेने का. अभी लिखेगा वो मैसेज. अच्छा, रुको दिखाता हूँ तुम्हें. थैंक्स अ लॉट राकेश भाई, बट आई थिंक किसी चैट में मुझे कोई विक्स भेज दो यार, बस बाकी सब चलेगा. बाकी तो चंगा है भाई, बाकी तो कर लेंगे मैनेज. गले की बात लग रही है. एंड यू नो व्हाट, as chat writes down the message, I have a question for you. आज स्ट्रीम कितने बजे तक चलेगी? कितने लंबी will be the longest game? So yesterday it ended right at 6. उसने ब्लंडर किया, गेम खत्म हुई, एंड अभी 6:15 तक स्ट्रीम. तो आज कब तक चलेगी? टेक अ गेस. Good question actually. I think 5.5 hours. ये मेरा बेट है. 5:30. चैट तुम क्या लग रहे हो? क्यों? No, I think 5 hours maybe, yeah, not that much. It's because you all guys predicted it would be fast win for every game. So maybe 5 hours, yeah. I am going to predict ना, नेपो और कारवाना ना आज पूरा 7 बजे तक खेलने वाले. भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज ये दोनों बैठे रहेंगे कि भाई आज भी डिसाइड करेंगे हम कैंडिडेट्स. हमें नहीं खेलना अगले राउंड, आज ही बैठ के डिसाइड कर लेते हैं भाई कौन जीतने वाला है, खत्म. और ये आज 7 बजे तक हम लोग बैठे रहने वाले भाई. स्ट्रीम में मजा आएगा. अरे हर्ष भाई ये वाला स्ट्रीम नहीं रहे. दिस स्ट्रीम विल एंड इन at 10, but दूसरे वाले स्ट्रीम रात का by the way chat, yeah, once again broadcast will happen on Chess24 India. Please note, उस वहीं पे जाने वाला है. एंड साहिल भाई, समय भाई वापस जुड़ने वाला है आपके साथ. तो कल कितना मजा आया समय भाई के साथ? भाई बहुत मजा आया. मतलब उन्होंने तो भाई अपना पेयरिंग वेयरिंग सब कुछ अपने कैमरा में ही दिखा दिया था हमें भाई. मैंने कहा भाई इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट काहे लगाया, उनका कैमरा ही लगा लेते हैं बस, काफी है भाई. बहुत ही मस्त था वो. सो चैट विल सी समय एंड तानिया जॉइन अस टुडे एज वेल. तो बहुत मजा आएगा. सहज भी ज्वाइन करेंगे, सो इट विल बी अमेजिंग. डू जॉइन अस देयर. एंड या आई कैन सी लोग कह रहे हैं 7 बजे, 4:30 बजे, 4:30, कितने में ज्वाइन करेंगे. बट रिगार्डलेस पता कितने बजे भी हो, बस इंडियन जीतने चाहिए यार. अगर इंडियन जीतते रहे तो हम तो भाई 12 बजे तक बैठने को तैयार है. कोई चक्कर नहीं है. हम रुक वर्सेस किंग रुक बिशप पॉन वर्सेस किंग रुक पॉन खेलेंगे. फिर वो पॉन एक्सचेंज जाएंगे, फिर किंग रुक बिशप वर्सेस किंग रुक खेलेंगे 2 घंटे. पूरा रेडी है हम भाई. बस अंत में जीत जाना भाई इंडियन प्लेयर्स. दैट्स ऑल वी वांट. वो तो. एंड KVM इन द चैट इज आस्किंग गुकेश तमिलनाडु से है या आंध्रा से? आई थिंक गाइस वो इंडिया से है. So there's no confusion there, but he lives in Chennai. If that helps. Yeah. And Tanya OP, one of the best commentators out there. हर्ष भाई बोल रहे हैं. And टिकू भाई आपका पहला ही स्ट्रीम था आई थिंक तानिया के साथ. How did that? हाँ, it was amazing. बहुत मजा आया. I think she's a professional, she's a pro. तो सीखने को बहुत कुछ मिला भाई. And chat आपके लिए, मतलब तानिया कर रही थी Chesscom ग्लोबल पे स्ट्रीम. खास आपके लिए हमने लाया तानिया सचदेव को at Chesscom India and Chess24 India mainly for this coverage. So do join us at 11:55 p.m. And Sahil bhai, DQ, any last words?
एक प्रवेश भाई लिख रहे हैं, वाओ अरिजीत सिंह इज हियर। भाई अरिजीत सिंह कौन है यहाँ पे? कौन है इसमें? हाँ है पता नहीं हाँ? भाई, आई डोंट नो। कौन है अरिजीत सिंह मतलब? पता नहीं भाई, हम में से कोई भी नहीं लग रहा यार। Anyways, chat. So I think it was amazing कि आप लोगों ने join किया. I think we'll see you in I think a couple of hours pretty soon with the actual broadcast जहाँ पे सारे players, सारे cams and of course we'll have Samay and Tanya there with us. तो बहुत मजा आने वाला है. Chat, do join us there. And Rakesh bhai, any final words as we go into day 6 of the candidates? Oh yes. Thank you for this. So I'm just saying all the best to Team India and I think maybe वापस Indians versus Indians pairing चालू होने वाला. So before I get that chance, so I have this Indian flag, chat, if you can see. Oops, अरे blur हो गया ना, blur हो गया. Blur क्यों हो रहा है Yes. अभी ठीक है. नहीं है भाई? अरे नहीं oh है। yes. हाँ ऐसा Yes. लगा। हाँ keep your face नहीं राकेश भाई keep your face, अच्छा otherwise face it's not दिखाना है मेरे को. good. अरे यार ये अलग ही टेंशन है. नीचे हाँ ही ऐसा रख रख दो। सकते. हाँ थोड़ा ऐसा बड़ा रख है मे बी इसके वजह से. But anyway, chat, you get the sentiment. Team India Let's playing go. all foreigners. Let's go. Come on. बहुत मजा आने वाला है. Chat, I'm predicting 3 Indians winning today. What about you, DQ and Sailman? I am not Indians in the open. jinxing it. Yeah, he's open है all five. Overall 5 Indians में से मेरे को लग रहा है 3 जीतने वाले हैं आज. I mean, if Prag जीत रहे तो वैशाली already 2 हो गया वहाँ पे. Oh yes, good point. So yeah. So yeah, Let's I have would a totally day. agree. Let's have a day जहाँ पे सारे जीतते हैं भाई. उससे जो हाइप बिल्डअप होगी ना, मजे आ जाएंगे भाई. अगर सारे जीत गए सडनली, ओहो खतरनाक. That would be crazy. सारा मीडिया ये वो going crazy. So Yeah. let's go. Let's make some very unrealistic, optimistic predictions and hope कि it works out. भगवान कुछ ना कुछ तो सुन रहा होगा ना. कहते ना वो क्या मतलब, दिन में 2 बार तो ब्रोकन घड़ी भी सही टाइम बताती है. So let's hope for that situation and hope कि ये काम कर जाए. Yeah. बिल्कुल. अरे हाँ, today's question कोई करना है राकेश भाई? आज का क्वेश्चन आपने पूछा ना वो स्ट्रीम, मेरे को लगा वही था गिव अवे क्वेश्चन. स्ट्रीम कितने बजे तक खत्म? नहीं भाई, वो तो Oh, मजे okay. थे भाई, वो तो मजे थे. Maybe Chat. ask him Oh. that con. चलो वही करते हैं फिर. that लेट्स डू इट. contest. चैट गेस करो कि जो हमारी चेस 24 की स्ट्रीम होगी वो कितनी लंबी होगी. फॉर 5 hours, 4 hours, 6 hours, एग्जैक्ट मिनट्स के साथ गेस करो. द गाय विद द क्लोजेस्ट आंसर गेट्स अ चेसकॉम मेंबरशिप. इस स्ट्रीम के खत्म होने में कमेंट्स में डालना. एंड ऑफ कोर्स वो हम फिर कल दे देंगे मेंबरशिप ऑटोमेटिकली. एडिट करोगे आंसर तो यू विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर इट. सो लेट्स गो चैट. See you soon. In a couple of hours. Take care. Keep smiling. Do join us in the Chess 24 broadcast chat. Bye. Bye. Bye chat.